Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part in technical terms in plant breeding. Starting with combining ability. Ability of a strain to produce superior progeny upon hybridization with other strains. मतलब एक strain दूसरे strain के साथ hybridize करा के कितना superior progeny देता है, right? Next one is complex cross. Any cross that involve more than two parents are known as complex cross or convergent cross. Next one is composite cross. A hybrid population generated from a large number of pure lines either by compositing equal seeds from F1 or F2 generation from all possible crosses among them or by ordering them into a complex cross or allowing them to cross with a genetic male sterile line and harvesting the seeds from only the male sterile plant in each generation. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं हाइब्रिड पॉपुलेशन जनरेट कर रहे हैं ठीक है कहाँ से लार्ज नंबर ऑफ प्योर लाइंस को यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं या तो फिर हम लोग कंपोजिटिंग कर दे सीड्स का F1 और F2 जनरेशन से मतलब F1 या फिर F2 जनरेशन से जितना भी क्रॉसेस हो सके उसके आपस में या फिर हम लोग उसमें एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स क्रॉस कराएं या फिर उसको जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन से क्रॉस कराएं और सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को हार्वेस्ट करें जो कि जेनेटिक मेल स्टेराइल प्लांट हमने बनाया था. Next is composite variety. Varieties produced by open pollination among a number of outstanding strains, usually not tested for combining ability with each other. मतलब हमें combining ability नहीं पता है, open pollination करा रहे हैं, right? Next is contiguous control, a control or check variety planted in an adjacent plot. A design for the evaluation of a large number of lines of progeny in which the control variety is planted in every fifth or seventh row or plant. Augmented design use करते हैं and the comparison of the line of progeny means are made with that of the nearest control. तो क्या कर रहे हैं चेक वैरायटी लगा रहे हैं आसपास में मतलब रोज में हर फिफ्थ या सेवेंथ रो को हम लोग चेक वैरायटी का रो लगा दे रहे हैं और उससे फिर नए वाले को कंपेयर करेंगे. Now what is control? In plant breeding, a known variety used for comparing the performance of new developed strain during their evaluation. मतलब कि हम लोग को एक वैरायटी का परफॉर्मेंस पता है अब उसको हम लोग यूज कर रहे हैं नए वाले का परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए कि नए वाला परफॉर्मेंस ज़्यादा है अच्छा है कैसा है. Now, convergent cross, we have already seen complex cross में कि a cross involving more than two parents. Now, the next one is coordinated varietal trial, that is CVT. ये एक trial है, ठीक है? Multi location trial है, MLT. Multi location trial usually for 2 years conducted under respective all India coordinated research projects for evaluation of the performance of newly developed strains in many crops and 1 year of IET initial evaluation trial precedes CVT. Now ये जो trials है इसका पूरा एक lecture है वो मैं बना दूंगी. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.